डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। Hello dear defense aspirants, this morning I am with you with a very heartening and a very glad news. We have with us one of the Trishul defense student who has very recently cleared his SSB, Yash Verma with us. Although he is 564th officer selection into the SSB from Trishul Defense Academy, but what is so special about him is that he is the first person after our founding director, Wing Commander Anoop Mehrotra, passed away on 30th of April this year. Now Yash was in the Trishul with Wing Commander Anoop in the last week of actually March. Thereafter, once the corona virus and the problems started, he took a break. Unfortunately, 30th April, Wing Commander Anoop went away. Because his SSB was supposed to be starting on 28th of June, we made it a very conscious effort that we start a bit of guidance for him before he really went. So we had a good 2-week session before he went. We started on 14th of June and we were lucky that he was with us. Without taking any further time, let us now talk to Yash, who is an alumni of Maharishi Patanjali in Prayagraj. He has done his BTech from SRM Chennai. Presently, he is a software developer in the TCS in their research wing. I'm working from home, and that also gave him time to really prepare for SSB. He was not recommended in his previous attempt for the TGC 133, which he attended at Selection Center East Allahabad, and second time after he went through the guidance at the Trishul Defense Academy, he went to AFSB Varanasi for AFCAT male 520 technical entry, and he got recommended over there on the 2nd July. So very fresh from the SSB, I'm sure you are very eager to see him and to talk to him and to listen to him. What has been his experience? So Yash, heartiest congratulations. Thank you, sir. And I'm so happy that you are sitting here as a recommended candidate. Let me tell you, I have done more than 7,000 interviews. I must have recommended a large number of candidates. Yes, sir. But as a assessor, I have never really interacted with a selected candidate or a recommended candidate. Yes, First sir. time I am sitting here with a recommended candidate. So let me now today hear a recommended candidate, what he has to feel. What is your feeling? What has happened? How things have gone? Yes, sir. So coming to Trishul Defense Academy in June has been a game changer for me. क्योंकि जब मैं 23rd मई को अपनी टीजीसी एंट्री के लिए गया था तो उस समय मेरी प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी स्क्रीनिंग के लिए, और ये चीज़ रियलाइज हुई कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप क्लियर आउट नहीं हो सकते. लाइक आप अपने रूम में प्रैक्टिस कर सकते हैं अकेले में, बट जो कॉन्फिडेंस या जो पर्सोना आप एक क्लास के बीच में 4 लोग के सामने 10 लोग के सामने आप जब लेक्चर देंगे या फिर स्क्रीनिंग की प्रैक्टिस करेंगे, जीडी में इन्वॉल्व होंगे, वो फीलिंग कुछ और है. वो जो कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है वो और कहीं नहीं मिल पाएगा. और सर जब ये 14 डेज की हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो उसमें मैंने लेक्चर की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की थी. आई अंडरस्टैंड हाउ द ग्रुप डायनेमिक्स वर्क, सो दिस हेल्प मी इन स्क्रीनिंग एज वेल. एंड सर ने काफ़ी डिटेल्स मुझे बताया कि मेरी स्टोरीज में क्या गड़बड़ हो रही है स्क्रीनिंग की, क्योंकि द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि फर्स्ट यू नीड टू गेट स्क्रीन इन. तो सर जब मुझे पता चला कि हाँ मेरी स्टोरी में ये डिटेल्स मिसिंग है, उसके बाद सर मैंने इम्प्रूव किया. और आई विल टेल यू, जब हमारा स्क्रीनिंग चल रही थी, व्हेन आई स्टार्टेड विद द डिटेल्स दे डिड नॉट वेट फॉर टू फिनिश. So they are like, okay, he is adding the details, that's it, and he stopped me there only, and I got screened in itself. सर ये समझ आता है कि सर प्रैक्टिस से, और जब कोई एसेसर आपको जज कर रहा होता है, अगर आप अकेले करेंगे उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा, अगर आपको कोई जज कर रहा है, आपको कोई एडवाइस दे रहा है, तो सर ये काफ़ी अच्छा था पार्ट मेरे लिए स्क्रीनिंग के लिए. और फिर सर उसके बाद जब मैं क्लासेस में आया, उसके बाद मैंने जब साइकोलॉजी की प्रैक्टिस स्टार्ट की,
तो आप घर पे अपने बिना प्रेशर के, बिना टाइम प्रेशर के अगर वैट और एसआरटीज चेक करते हैं या सिर्फ लिखते हैं, तो उसमें आप भले 50 लिख जाएं, बट द थिंग इज देयर शुड बी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. आई रोट अराउंड 40 एसआरटीज, क्योंकि सर फर्स्ट डे पे हम लोग की स्क्रीनिंग के बाद सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट हुए थे, तो एंड में एसआरटी आते थे, काफी वीक हो गया था माइंड. बट स्टिल व्हाट आई बिलीव इज दैट इट वाज द क्वालिटी दैट हेल्प मी क्लियर द एसएसबी एंड गेट रिकमेंडेड. और क्वालिटी सर तभी आती है जब आपके लिए कोई आपको क्रिटिकली एनालाइज करे कि इसमें क्या गड़बड़ है, क्या अच्छा है. क्योंकि सर ने मुझसे कह रहे थे कि मेरे एसआरटीज कंपैरेटिवली अच्छे थे, बट आई नीड टू वर्क ऑन माय क्वांटिटी. सो सर ओवरऑल ये समझ आता है कि आप अगर स्टैंड अलोन या आपके पास अगर कोई प्रॉपर्ली गाइड करने को नहीं, तो सर इस तरह प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं है. That's very good. Actually, what he wants to tell you, gentlemen, is that if you need to clear your stage 1, you need to be working on your confidence. And I have been with him for good about 14 days in this Trishul Defense Academy, and I found that he was a person who had good power of expression, a person who had good motivation level, a person who had a lot of go in him. It was basically because he needed rounding off his edges, and I'm very happy that he really picked up those hints and the tips that we gave him. We at Trishul Defense Academy give you a lot of time to actually prepare yourself. Remember, it is not a classroom teaching. You are no longer a student. You are going in for an SSB which is looking for your personality, your qualities. They are looking for a potential in you. So most of the times we give you a lot of time to yourself, give you and show you a path, and thereafter we expect that you will start working yourself. I'm happy that he worked very hard on his lecturate, and he was talking to me about the lecturate topic that he got. A lot of times, candidates are very keen to understand, Yash, what all topics were given to you in your lecturate. So you could talk about something about that. सो आई बी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज़्यादा मेरे पास टाइम रहता था कि मैं प्रैक्टिस करूँ या मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँ जनरल नॉलेज के. लेकिन जब हम लोग यहाँ पे क्लासेस चलती थी तो काफ़ी सारे टॉपिक्स अगर आप खुद को भी नहीं दी जाए तब भी इतने सारे स्टूडेंट्स आपके अराउंड प्रेजेंट कर रहे हैं कि यू लिसन टू देम. सो बेसिक टॉपिक्स लाइक CPEC, वुमेन रिजर्वेशन बिल्स, एंड आई गॉट वन टॉपिक एज BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस. So I worked on it and I presented the lecturate. It was good. Now when I went in the lecturate in the SSB, मुझे टॉपिक्स आए थे यूनिसेफ के बारे में और फिर यूनाइटेड नेशन पीस कॉर्प्स के बारे में, और मुझे कोई आइडिया नहीं था, बट आई समहाउ गॉट नेशनल हाईवेज एज वेल, एंड इट वाज द एक्सपीरियंस फ्रॉम द अकेडमी बिकॉज ऑफ BRO. 70% of my lecture revolved around BRO, and then 30% is commonly which can be NHAI and the national highways that has been growing on. So ये मुझे चीज़ समझ आई कि you don't need to go deep and dig a lot. You need to practice. So अगर आप यहाँ आके प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अपना तैयारी कर रहे हो, आप काफ़ी लोग के लेक्चर सुन रहे हो, उसकी ज़्यादा नॉलेज आपके अंदर गेन होती है. आप कहा जाता है कि आप रीडिंग से ज़्यादा नॉलेज नहीं गेन कर सकते जितना आप लिसनिंग और सीइंग से कर सकते हैं. तो एक वो जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है एकेडमी में, वो सर काफ़ी अच्छा था सर मेरे. उससे मैं एक लेक्चर क्लियर कर लिया आराम से. Good. Now, gentlemen, most of the time when I'm, interacting with the candidates, my emphasis is always that if you have it in you, there is nothing extraordinary you require to do. All that I expect or the assessor expect you to do is get genuinely involved into the testing procedures. Did this saying ever help you through your SSB? सर एक्चुअली व्हाट आई बिलीव इज मैं रिकमेंडेशन लेने नहीं गया था वहाँ मैं एंजॉय करने गया था. एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम लोग ने यहाँ पे GTO की प्रैक्टिस की थी काफ़ी ज़्यादा GTO ग्राउंड पे, और लेक्चरेट और GD की इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी कि द फर्स्ट डे वाज लेक्चरेट एंड GTO ओनली. सो लेक्चरेट में अगर आपने एक बार अपने ग्रुप में कॉन्फिडेंस जनरेट कर लिया, क्योंकि व्हाट आई बिलीव इज दैट अराउंड 40% इज योर ग्रुप. इफ योर ग्रुप इज पॉजिटिव दे विल वॉच आउट फॉर यू, और आपके अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ अगर मेरे ग्रुप वाले मेरे से कह रहे हैं तो फिर ऑफकोर्स मैं क्लियर कर सकता हूँ. तो जब सर मैं लेक्चरेट के लिए गया, GD के लिए गया, तो उसमें सब लोगों ने कहा कि तुम्हारा काफी ज़्यादा इंप्रूव्ड है. दे डिड नॉट नो कि मैंने इतनी अच्छी प्रैक्टिस की इतने सारे लोगों से, और यहाँ पे भी आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो तो आपको समझ आता है कि ग्रुप डायनेमिक्स कैसे वर्क करता है. और उसके बाद जैसे सर हम लोग GTO ग्राउंड गए, सर यहाँ पे GTO प्रैक्टिस इतनी अच्छी थी कि सर वहाँ तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा सोल्यूशन देने में. और उसके बाद सर मेरा कमांड टास्क भी काफी अच्छा गया, सारे टास्क मेरे अच्छे गए थे GTO ग्राउंड वाले. तो एक बूस्ट अंदर हो जाता है कि हाँ मेरा GTO अच्छा गया हुआ है, अगर मेरा साइक अच्छा गया तो ऑब्वियसली मेरा इंटरव्यू भी अच्छा जा सकता है. एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है सर इतनी प्रैक्टिस से सर, तो उससे काफी प्रॉफिट मिला. So you being yourself, very genuinely involved into the activities, keeping your calm, keeping your
cool. Yes, sir. How did all these tips that were given to you helped you? सर जैसे हम लोग की जीडी होती थी तो एक काफ़ी ज़्यादा फिश मार्केट काइंड ऑफ सिचुएशन बन जाती, इवन इन स्क्रीनिंग, स्क्रीन आउट, फ्रेशर, कोई भी सीन हो। तो सर ये मुझे समझ आया कि सर ने कहा कि वेट फॉर द राइट टाइम, एंड उन्होंने कहा कि ज़्यादा मत बोलो, जितना बोलो अच्छा बोलो। और ये चीज़ सुनने में अलग होती है कंपेयर टू कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो जब हम लोग ग्रुप में प्रैक्टिस करते थे काफ़ी 10-15 लोग, तो सर समझ आता है कि वो जो एक हिंट होता है, जो एक पॉइंट होता है, वो मिलना काफ़ी टफ होता है। जैसे मैं टीजी से एंट्री में गया था, उस समय मेरी सर ये प्रैक्टिस नहीं थी और मैं गया और मैं रैंडमली बोल रहा हूँ। इट वॉज नॉट अ कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन, बट ओनली आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ओवर हियर आई गॉट टू नो कि हाँ ये ट्रैक मुझे पकड़ना है, इस बंदे मुझे सपोर्ट करना है, या फिर इस पॉइंट पे मुझे बोलना है जिस समय से लिसन करने लगे। सर ये प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी है, एक काम नेचर काफ़ी ज़्यादा बनाना पड़ता है। ग्रुप में काफ़ी लोग थे जो थोड़ा आई वोंट से वायलेंट, बट हाँ थोड़ा एक्टिव हो जाते थे, हाइपर एक्टिव हो जाते थे। उनको काम डाउन करना, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। अगर आप एक काम पर्सन है, उससे सर एसएसबी में काफ़ी ज़्यादा सर प्रॉफिट हुआ था। Okay, I think that tip we have always been talking of, that a wise, intelligent candidate does not actually join the chorus, does not join the fish market. He waits for the opportune moment. Remember, while you are in a group, a lot of candidates, they keep talking endlessly, and an intelligent candidate understands that those candidates are not like those singer who sings and does the breathless singing. Yes, sir. So they have to come down to take their breath. Yes, sir. And that is the right opportunity. And more importantly these days, because you are wearing a mask, you are wearing a face shield, you have got to be really loud, you got to be deliberate in your speech for people to understand you. Yes, sir. I'm so happy. Yash, when he started, actually he still has that tendency to maybe speak a little fast. Yes, sir. What you see today is actually a little more toned down. When he started, he was a little more faster than this. Yes, So sir. I'm sure he must have paid a lot of attention to this deliberation while speaking, Yes, which sir. is very, very important thing. Any other thing that stands out in your SSB this time, which you would want to share with those candidates who are looking up to you for their motivation, for their zeal and enthusiasm? सर आई वुड से कि आप अगर आपके अंदर मोटिवेशन है तो जेन्युइनली आपका क्लियर हो जाएगा, बट यू नीड द राइट पाथ और द राइट एडवाइस। क्योंकि व्हाट आई लर्नड ओवर हियर इज कि आई ट्रस्टेड देम कि वॉट एवर दे से दे आर सेइंग राइट ओनली, एंड इवन इट सीम्स कि यार इतने सारे लोग बोल रहे हैं, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्यों वेट कर रहा हूँ। वो होल्डिंग ऑन करना जो यहाँ से ट्रेनिंग मिली सर, ये काफी ज्यादा इंप्लीमेंटेशन काफी अच्छा था वहां पर। इवन देयर वर सम इश्यूज विद द मेस इन आवर एसएसबी, and a lot of people around me told कि यश यार you should say something because you are doing quite good in our group, and maybe you should go in the conference and say कि यार मुझे मेरे से प्रॉब्लम थी। but what I genuinely believe, या what I not I'll say learn, but what I absorb from them कि यार जो हो रहा है अच्छी क्लियर। so I straight away went in the conference. My the president of the board asked me the same thing, that why don't you have any problem with your mess, as a lot of people from your group has it. Sir, I told them that I came here for selection. I am getting accommodation, food, friends, and maybe a chance to get into the service as well. I don't expect any kind of luxury. It is the teachings, not as in deliberately spoken to you, but you have to absorb it. That understood, everything is fine. You have to just be yourself, and it will turn out to be great. So that was actually a genuine feeling. Yes, sir. Food, in any case, gentlemen, I think everybody has a different taste. Everybody has a different liking. So I'm so happy that you could maintain that composure and that advice that you be yourself. And I think it's a very, very nice thought that you said, that you not looking for luxury. Very good. I wish you all the very best, Yash. It's been very nice having you here. Thank you, sir. I know you are working, you have a very busy schedule. Yes, and despite that, since you've worked hard, your hard work has paid. Yes, sir. All our best wishes. You have done Trishul Defence Academy proud. Yes, sir. Thank you you, have done sir. Prayagraj proud. Thank you, sir. That's an honor. You are one of those candidates from the Prayagraj. I have met a lot of people who get recommended, but I am very happy, and very happy that as a director, I had the first chance of interacting with you. You are the first candidate who went for SSB from here, and you got recommended. Yes, sir. I'm sure many more will follow. Yeah, of course, sir. But my best wishes, Yash. Thank you, sir. God bless you. Thank you, and sir. all the very best, yeah. Thank Okay, you. do well. डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी
क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।